Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and viewers. This is second half of our lecture, and today lecture is about cloud service providers. So part first में हमने जो first provider है cloud services, which is the leader or the pioneers of cloud services, Amazon Web Services AWS, उसके बारे में हमने बात की थी. We see some famous services from Amazon like EC2, Lambda, Dynamo, and S3. We also see different regions, and currently there are more than 20 regions where Amazon services are deployed or where Amazon is functioning. Also, we see some types of instances that are available and the current competitors in the market and how Amazon is dominating them. Then we see some technologies on which the Amazon is based, like something related with the storage, networking, and then at the end we see how to create a AWS account and how to avail the free trial for deployment of different services. In this second half of the lecture, we are going to talk about two other service providers, and the one is from Microsoft while the second one is from Google. So let us talk about Microsoft Cloud Services, and that is called Azure or Azure. We are going to explore this in a moment. Microsoft is a challenger in the race for who is the biggest cloud vendor. यानी जो Amazon है उसका जो first competitor है in the race behind Amazon, that is the Microsoft. It is also a biggest cloud vendor, and they are certainly provide a huge cloud services and also enormous number of services related to the cloud. यानी Amazon की तरह Microsoft भी a huge number of cloud services अपने customer को provide करता है. जो Microsoft का viewpoint है, that is a bit different, and they claim that we put cloud and mobile first before everything or before everything else. Okay, like you have to put each and everything in the cloud, you have to manage all the things in the cloud, and mobile mean that you have the option to access the services from anywhere which are stored in the cloud somewhere. So they have always aimed at businesses and providing support for the businesses. And of course, one of their benefit they can do is to bring the office component and all of the office software to a very large audience. Yani Microsoft is famous for his one of his product, and that is Microsoft Office. तो इनका जो क्लाउड का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इन्होंने जो ऑफिस के कंपोनेंट्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं उनको क्लाउड पे ये ले आए हैं, एंड नाउ दे आर यूजिंग बाय अ लार्ज ऑडियंस. एंड द प्रोडक्ट यानी ऑफिस का जो प्रोडक्ट है जिसको आप क्लाउड पे यूज़ करते हैं उस पे हमने काफ़ी एग्जांपल्स भी देखी थी, एंड दैट इज़ कॉल्ड द ऑफिस 365. So let's have a look on their system and what they provide. जिस तरह हमने Amazon के बारे में देखा था, Amazon को हमने एक्सप्लोर किया था, AWS के सर्विसेज को हमने डिटेल से देखा था. Now it's time to see what Microsoft promised to offer to their customer. Well, Microsoft actually they emphasized trying to build a competitive service, and they have even provided a competitive way of doing virtualization as provided by Hyper-V.
And the intention is, of course, not to get locked into VMware software, right? So they have their own hypervisor, and there is Hyper-V, and it distinguish it from the Amazon, how Amazon is doing the stuff and how the Microsoft is doing. So Microsoft Azure, या Azure, बेसिकली ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस भी प्रोवाइड करता है और ये आपको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी प्रोवाइड करता है. Their big selling or marketing point is really the provision of Office 365, right? जिस तरह मैंने अभी बताया आपको कि इनका जो प्लस पॉइंट है, जो एज है, इनके काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स जो हैं वो ऑफिस को यूज़ करते हैं ऑन देयर ओन सिस्टम्स. सो नाउ दे प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव एंड देयर इज़ द ऑफिस 365. और ये सर्विसेज आईपैड पे भी अवेलेबल है, स्मार्टफोन्स पे भी अवेलेबल है. सो एवरीबॉडी हु इज़ customized to the actually using Microsoft for a business, they can actually they actually just move to the cloud solution where the same services are available over the cloud and they can access them from anywhere. इसके अलावा यानी ऑफिस 365 के अलावा एक और सर्विस है जो कि बहुत कॉमन है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट जिसको प्रोवाइड करता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड शेयर पॉइंट. Shared point is actually a shared file system, and there is another sort of sales point because they have a lot of customers in that area. ठीक है, तो अगर आपको शेयर्ड फाइल सिस्टम यूज़ करना है तो आप उसको क्लाउड पे यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज कॉल्ड शेयर पॉइंट. Okay, one of the claim Microsoft makes is that if you have a local business, right, and you have set up a computing environment without networking and your office and all of other different applications in your Microsoft environment, यानी अगर आपका अपना एक सेटअप है फिज़िकल और आप जो है वो नेटवर्किंग के अलावा अपने सेटअप को, अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, आपका अपना कोई कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है एट योर ओन ऑफिस, और आपके पास बहुत सारे और भी एप्लीकेशंस हैं, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप यूज़ कर रहे हैं. सो अगर आप क्लाउड पे शिफ्ट होंगे, राइट, दे विल मूव दैट environment to the cloud. यानी जो माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप अपने सिस्टम्स पे यूज़ कर रहे हैं अपने ऑफिस में, बिजनेसेस में, उन्हीं प्रोडक्ट्स को आप क्लाउड पे भी यूज़ कर सकते हैं. एंड डेफिनेटली द माइक्रोसॉफ्ट वुड डू दैट एंड यू विल रिटेन ऑल ऑफ द फीचर्स एंड कनेक्टिविटी एंड सम कस्टमाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द प्रोडक्ट्स, राइट. यानी जो सेटअप आपको फिज़िकल वर्ल्ड में अवेलेबल है वहीं आपको क्लाउड में भी अवेलेबल होगा. जो प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वही आप क्लाउड पे भी यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा एक प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट की, एक सर्विस है यामर जिसे हम कहते हैं, एंड देयर इज़ समथिंग रिलेटेड विद द सोशल एंड कोलैबोरेटिव या कोलैबोरेशन नेटवर्क. And also they provide Exchange, which is another service, and that is like Google Gmail. ईमेल की सर्विसेज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का आप लोगों ने नाम सुना होगा. It's a mail service and their Exchange service is very large. Now they are also providing a voice over IP service. अगर आपको पता हो Skype जो है, there is something linked with your Hotmail account. यानी अब आप Skype को यूज़ कर सकते हैं by using your Microsoft ID, live ID, उसको यूज़ करते हुए आप voice over IP की सर्विसेज को भी यूज़ कर सकते हैं. there is Skype. And they also provide customer relation management जिसको हम CRM कहते हैं, and that is very dynamic system, and again that is been quite successful from Microsoft side. So these were some of the services जहाँ पे Microsoft in है बहुत ज़्यादा, जिसमें हमने बात की ऑफिस की, different products की, applications की which are built for by the Microsoft. इसके अलावा Yammer है, इसके अलावा CRM है, Exchange है और Skype है. So Microsoft Azure, it was launched by Microsoft in 2010,
and it will provide both types of services, right? So the services are like infrastructure and also the platform is a service. There is really sort of interesting features इसमें हैं Microsoft की services में बहुत सारे features हैं that got itself there in the cloud. So what it allow you to do is to make your local cloud and connect it to a bigger Microsoft cloud जिसको हम हाइब्रिड क्लाउड कहते हैं. उस प्लेटफॉर्म के लिए भी लोग माइक्रोसॉफ्ट को यूज़ करते हैं. और हाइब्रिड क्लाउड का मैंने आपको बताया था कि एक प्राइवेट क्लाउड होता है, एक पब्लिक क्लाउड होता है, and then we have a community cloud and also the hybrid cloud which is a combination of public and private cloud. तो अगर आपका अपना कोई छोटा सा प्राइवेट क्लाउड है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई सेटअप है और आप उसको जो है वो लिंक करना चाह रहे हैं विद अ लार्जर सेटअप एट द माइक्रोसॉफ्ट अजूर, तो वो आप इजीली जो है वो हाइब्रिड क्लाउड आर्किटेक्चर को जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं. Now some of the uses of Microsoft Azure. What can you use Azure for? Well, pretty much you can use it for anything, to be honest. And all of the topics we discussed before until here, like different virtual machines or storage or using different applications, networking, infrastructure, databases, etc. all are available with Microsoft Azure. Right? So you can build your own virtual machines and you can install your own applications on top of those virtual machines. In fact, Azure will allow you to run different flavors of Linux operating system as well. Linux operating system. It will allow you to run any other sort of Unix system as well. Linux, Unix, Solaris, Windows, whatever you want to install, you can build it yourself. दे आर कम्प्लीटली न्यूट्रल विद रिस्पेक्ट टू दैट. यानी ये नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है तो सिर्फ आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं. नो, यू कैन एक्चुअली यूज़ लाइनक्स एंड यू कैन यूज़ यूनिक्स, सोलरिस एक्सेट्रा. सो दे आर वेरी न्यूट्रल विद रिस्पेक्ट टू दैट. इसके अलावा ऑब्वियसली विंडोज़ वर्चुअल मशीन्स भी आप कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस भी आप कर सकते हैं. और जो इसका जो बेसिक है .NET फैसिलिटीज़ बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन है. दे आल्सो प्रोवाइड वेरी गुड .NET फैसिलिटीज़ ओवर द क्लाउड. एंड इफ़ यू वांट टू एक्सटेंड योर .NET टू योर .NET एप्लीकेशन टू द क्लाउड, देन Azure इज़ द वे टू गो. ओके, अगर आप .NET डेवलपर्स हैं तो ये फैसिलिटी भी Azure जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा. ओके, Azure ने अपना ओन ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया है एंड दैट इज़ कॉल्ड विंडोज़ Azure. जिस तरह ऑफिस है उसके मुकाबले में ऑफिस 365 है, इसी तरह इनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ के मुकाबले में है, दैट इज़ कॉल्ड विंडोज़ Azure. दैट इज़ यूज्ड फॉर देयर डेटा सेंटर क्लस्टर्स में जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग उसको. एंड दैट डज ग्लू to actually make all of the Azure do what it's using. For example, different kinds of application जो कि कुछ applications हैं जिनको आप सिर्फ Windows पे ही चला सकते हैं, तो उस केस में there is the best option to go for the Windows Azure. और चूँकि वर्चुअल मशीन्स हैं तो हमें हाइपरवाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी. तो here in this case we have a hypervisor and there is called Hyper-V. जिस तरह मैंने कहा कि there is the proprietary. So it's a Windows Server Hypervisor. इसके ऊपर आप जो है वो Windows Azure को इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके ऊपर आप जो है वर्चुअल मशीन्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स को जो है वो आप रन कर सकते हैं और डिफरेंट इंटरफेसेस और एप्लीकेशंस फिर आप उसके ऊपर जो है वो चला सकते हैं. Beside from Windows Azure, it also support Windows Server. So you can take your customized environment. अगर आप Windows Server को यूज़ कर रहे हैं अपनी कंपनी में तो उसको भी आप जो है वो क्लाउड पे लेके जा सकते हैं and you can move it out to the cloud very easily. So you can provision and manage the virtual machines on it. यानी आप अगर Linux, Unix या Windows Azure के अलावा आप अगर विंडोज सर्वर इंस्टॉल करना चाहें क्योंकि आप उसके साथ फैमिलियर हैं तो आप इजीली उसको मूव कर सकते हैं ऑन द क्लाउड. एंड यू कैन अटैच एंड मैनेज डिस्क
on it just it if it was locally. जिस तरह आप locally Windows server को use करते हैं कंप्यूटर्स को मैनेज करने के लिए, हार्ड डिस्क को मैनेज करने के लिए, इसी तरह क्लाउड के अंदर भी अगर आप विंडोज सर्वर को इंस्टॉल कर ले तो वहाँ पे भी ये सारी मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं. सो दिस इज़ एक्चुअली अ ग्रेट वे ऑफ बिल्डिंग अ हाइब्रिड क्लाउड solution that is flexible, part of which is going to be your private cloud and part of which is going to be your public cloud. और आप इन दोनों को flexibly manage कर सकते हैं with the help of Windows services, sorry, with the help of Microsoft Azure services. And also it will provide you the option of scalability. For example, कोई event है like Christmas, like Eid, like peak hours, और आपको ज़्यादा resources चाहिए तो pay as you go model है. तो आप easily more devices को, more computing power को, more storage devices को, more infrastructure को, most computer को आपस में link कर सकते हैं, most resources को आप use कर सकते हैं. As long as your demands are increasing, you can easily scale your resources. So Windows Azure का मैंने आपको बताया. There is the operating system in the data center. It treats the whole data center as the machine. Data center में अगर आपको याद हो, you have different type of servers in racks, and you have switches connecting those racks, and you have high level switches and so on. So उस data center को ये जो operating system है, it will treat is like a single machine. It will handle the resource management like provisioning, monitoring, management of applications, and it will also allow the developer to concentrate on the business logic in their own operating system. चूँकि hybrid environment है तो जो ये आपको allow करेगा कि आप अपने private setup पे ज़्यादा focus कर सकें, their own systems, जो आपके अपने systems हैं उन पे आप focus कर सकें that you have built. So for example, it provide a shared pool of computing resources like network, like compute disk. It also provide virtualized storages that compute and networking facilities. For example, all sort of mapping facilities like Windows Azure operating system. ये सारी facility जो है वो आपको real time में provide करेगा. Okay, so it also provide you common building blocks for distributed application, distributed management or distributed applications. उसकी management, उसको manage करना, ये facility भी जो है जो Windows Azure है operating system है ये आपको provide करेगा. रिलायबल उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, लाइक रिलायबल क्यूइंग का ऑप्शन है, उसमें सिंपल स्ट्रक्चर स्टोरेज है, एसक्यूएल स्टोरेज है, एक्सेस कंट्रोल किस तरह होंगी, कनेक्टिविटी किस तरह की होंगी, ये सारी की सारी चीज़ें जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन से रिलेटेड है ये आपके लिए मैनेज करेगा. इसके अलावा एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स जो है दे आर क्वाइट सोफिस्टिकेटेड ऑफ द विंडोज़ एजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सो ऑन. इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि यहाँ पे मेंशन्ड हैं. Some of the component that we see in the Azure, you have your service model. For example, इसमें जो है .NET है, इसके अलावा ASP.NET है, PHP है, and so forth, so on and so forth. ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो विंडोज सर्वर जिस तरह मैंने बताया वो इसमें अवेलेबल है, और भी कंपैटिबल R2 कंपैटिबल ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं. वर्चुअलाइजेशन इज़ विंडोज़ एज़ूर हाइपरवाइजर दैट इज़ बेस्ड ऑन 5 Hyper-V और रोमन 5. इसके अलावा सर्वर्स हैं, SQL को सपोर्ट करता है ये डेटाबेसिस में. स्टोरेज में जो है वो ब्लॉब क्यू टेबल वगैरह का स्ट्रक्चर ये यूज़ करता है. एंड नेटवर्किंग के लिए कॉन्फ़िगर्ड नेटवर्क है एज़ूर का अपना, वो भी इसमें इसके कंपोनेंट्स में है. ओके, मॉडलिंग क्लाउड एप्लीकेशंस. अब ऑपरेटिंग सिस्टम की तो हमने बात कर ली, थोड़ा सा हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की. मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ ईच is available for the reason of scalability and availability, and what Azure does is to provide you a model of these cloud applications, so you can pick one and then you can instantiate different pieces of it in the ways that you want or you prefer.
ओके, माइक्रोसॉफ्ट एजूर को थोड़ा सा हमने देखा. नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट प्रोवाइडर एंड दैट इज़ द गूगल. रिमेंबर दीज थ्री आर द डोमिनेंट. सब इन तीनों में फिर सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो हमारे पास AWS है, बट वी आल्सो हैव गूगल एंड द माइक्रोसॉफ्ट. इसके अलावा और भी हैं, बट इन तीनों को हम सिर्फ स्टडी करते हैं इस कोर्स के लिए. एंड इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पे हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया, दैट इज़ AWS. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वही इंपॉर्टेंट है. गूगल को थोड़ा सा देख लेते हैं. गूगल का आपको पता होगा व्हाट इज़ गूगल. गूगल आल्सो प्रोवाइड्स वन ऑफ द लीडिंग online advertisement system in the world. Beside from providing the cloud services, Google is famous for advertisement, online advertisement in the world. और इसका जो जो एडवांटेज है गूगल का कि इट हैज़ अ ग्रेटर आउटरीच देन मोस्ट ऑफ द अदर कंपनीज. यानी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट में इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो गूगल से काफ़ी पीछे हैं बिकॉज ऑफ इट्स सर्च कैपेबिलिटीज़, राइट. एंड आल्सो आपको पता होगा कि गूगल को हम नॉर्मली जो जानते हैं, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, वाज अ सर्च इंजन. दैट इज़ हिज पॉपुलैरिटी. एंड देन होते होते नाउ वी हैव मोर देन हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस अवेलेबल, राइट. अब इवन आप जो इस क्लासरूम को जो हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ गूगल, राइट. जीमेल आप लोग यूज़ करते हैं, कैलेंडर्स आप लोग यूज़ करते हैं, हैंगआउट्स आप लोग यूज़ करते हैं, गूगल डॉक्स आप लोग यूज़ करते हैं, एंड द लिस्ट गोज़ एंड गोज़ एंड गोज़. बट इट स्टार्टेड, इसकी जो पॉपुलैरिटी है दैट वाज बिकॉज ऑफ द सर्चिंग, और इसकी जो रेवेन्यू है दैट इज़ ऑन एडवर्टीजमेंट, राइट. सो इट्स कॉम्पिटिटर आर मेनली फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में इसके कॉम्पिटिटर नहीं है, पूरी दुनिया में इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, but they are far behind from Google. Okay, so the Google actually provides services to small and medium-sized businesses. Well, the beauty of the Google Cloud services is that Google जो है, it always changes. It always adopt itself to the demand of the customer, to the needs of the customer. Okay, so Google is aiming providing you the best advertisement services that it can. यानी with passage of time customers की demand जो है वो change होती है, their need changes with the passage of time, और Google जो है वो खुद को market के साथ जो है वो parallel लेके चलता है, right. यानी जो चीज़ें मार्केट में इन हैं उसको गूगल जो है वो अडॉप्ट करता है. टेक्नोलॉजी वाइज जो चीज़ें हैं या बिजनेस वाइज जो चीज़ें हैं उनको गूगल जो है वो अडॉप्ट करता है. सो दैट इज़ वाई दे आर वेरी मच इन द एडवर्टीजमेंट वर्ल्ड. इन अदर वर्ड वी कैन से कि इट इनोवेट्स वेरी रैपिडली. यानी जो जो इनोवेशन है, जो जो चीज़ें बिल्ड हो रही हैं उसके साथ गूगल ख़ुद को जो है वो एडजस्ट कर लेता है, right. So Google accommodate itself very rapidly to the innovations that happening from day to day. Beside, Google is also very good at creating real-time data, right. Why? Because it see what people needs are थ्रू इट्स एडवर्टीजमेंट सर्विसेज. यानी इसको पता होता है कि लोग कौन सी चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं, लोगों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है. गूगल अपना डेटा जो है वो रियल टाइम में क्या हो रहा है उसको जो है वो गूगल सेंस कर सकता है. इट हैज़ मैनी डिफरेंट सर्विस सिस्टम्स दैट ट्राई टू गिव यू द बेस्ट अपडेट डेटा पॉसिबल. रियल टाइम में बहुत सारे सर्विसेज हैं जो कि हम गूगल में गूगल की यूज़ करते हैं. एंड वन ऑफ देम इज़ फॉर एग्जांपल गूगल जो मैप्स हैं, राइट. रियल टाइम में ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन आप जो है वो देख सकते हैं. कंजेशन कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से रूट्स जो है वो इस टाइम पे लेस कंजेस्टेड है, एक्सेट्रा. सो रियल टाइम में भी इसका इनपुट काफ़ी ज़्यादा है गूगल का. अगर हम बात करें क्लाउड की, सो गूगल एक्चुअली चैम्पियंस द क्लाउड. इट्स नॉट इनटू द हाइब्रिड क्लाउड जिस तरह हमने माइक्रोसॉफ्ट के केस में देखा कि एक उसका उनका जो फोकस है कि जो आपका प्राइवेट क्लाउड है उसको पब्लिक क्लाउड के साथ लिंक करे,
राइट आपको उस जैसा एनवायरनमेंट जो है वो क्लाउड पे भी प्रोवाइड करे जो कि आप अपने ऑफिस में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन गूगल का जो फोकस है वो हाइब्रिड पे नहीं है। इट डजेंट वांट यू टू हैव योर ओन गूगल एंड देन सॉर्ट ऑफ अपलोड देम टू अ बिगर गूगल, यानी प्राइवेट को पब्लिक पे लेके जाए जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट का अप्रोच है। नो। So what's Google trying? Google it's trying to provide a cloud that everybody will use, which will remove the necessity in a sense of having your own local compute systems, right? Microsoft आपको up to some extent bound करता है कि अगर आप Microsoft के products use कर रहे हैं over on your local computers in your local environment, then you have to use the same products in the cloud, in the public cloud. गूगल का अप्रोच जो है वो डिफरेंट है। ये आपको बाउंड नहीं करता कि आप गूगल के प्रोडक्ट्स को ही लोकल से जो है वो लेके जाए क्लाउड में, पब्लिक क्लाउड में। एंड इट एक्चुअली वर्क एट अ वेब स्केल, द वर्ल्ड वाइड वेब। सो इट्स गोट एन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज़ द ग्लोबल। इनका जो फोकस है, एम्फेसिस है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस पे है। पूरी दुनिया में लोग इसको जो है वो यूज़ कर रहे हैं। सो देयर इज़ अ फेमस कोट and that is like this कि we are not like you and you should want to be like us। हम आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप जो है हमें फॉलो करेंगे। so this is something the Google is talking to the rest of the world, right? यानी हम आपके फुटप्रिंट पे नहीं चल रहे हैं, you have to follow my footprint। so this is something a big claim that Google has made, but that is the reality। so पहले हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग। यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं एप्लीकेशन एज अ सर्विस की, क्योंकि नॉर्मली हर एक क्लाउड प्रोवाइडर जो है, सर्विस प्रोवाइडर जो है, वो एप्लीकेशन एज सर्विस को प्रोवाइड करता है। आप गूगल की बहुत सारी एप्लीकेशंस को फ्रीली यूज़ कर रहे हैं एंड दे आर एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन एज अ सर्विस। वी आर टॉकिंग समथिंग दैट इज़ रिलेटेड विद द बिजनेस, राइट? अगर आपको क्लाउड में अपना कोई अकाउंट बनाना है, कोई आपको कंप्यूटिंग पावर चाहिए, स्टोरेज पावर चाहिए, नेटवर्किंग फैसिलिटी चाहिए, मैनेजमेंट कुछ चीज़ें चाहिए, राइट? तो उसकी हम बात करें तो उसके लिए दो ही ऑप्शन है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इफ़ यू आर अ डेवलपर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इज इफ़ यू आर एडमिनिस्ट्रेटर। So let us talk about platform as a service. So what it provides, what Google provide, its main emphasis is not only on the infrastructure but also on the platform, although it does offer पहले जो है गूगल का फोकस वो बहुत ज़्यादा जो था वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे था। अभी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज भी ये ऑफर करता है, but still the emphasis is on platform as a service. So if you like it focused on platform as a service because of its search and so on, this was easy to do। for example, जो गूगल बेसिक जिस तरह मैंने बताया कि इसने जो स्टार्ट लिया था इट वाज फ्रॉम सर्चिंग। सो आप कह सकते हैं कि जो गूगल का जो फोकस था वो प्लेटफॉर्म पे था रादर देन इंफ्रास्ट्रक्चर, बट नाउ इट्स जम इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल। इसके अलावा गूगल जो है इंफॉर्मेशन एज अ सर्विस सॉर्ट चीज़ें भी स्टार्ट की हैं, क्योंकि अमेज़ॉन वाज सो डोमिनेंट। जिस तरह मैंने बताया कि देयर इज़ द लीडर इन द क्लाउड सर्विस प्रोविजन, प्रोवाइडर्स की जो लिस्ट है उसमें अमेज़ॉन जो है वो टॉप पे है। सो गूगल ने जो है कॉम्पिटिटर के तौर पे उसको लिया एंड देन उसने जो है स्टार्ट किया प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और जो फेमस थिंग है दैट इज़ द गूगल ऐप इंजन। पहले इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी जब हम स्टडी कर रहे थे डिफरेंट सर्विसेज को। वहाँ पे मैंने बताया था कि गूगल की जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है दैट इज़ कॉल्ड द गूगल ऐप इंजन। And the Google app engine, it will allow you to code in different tools in different languages like Python है उसमें, Java है, PHP है, and Google का जो अपना Go है, auto scaling etc. So इन tools में आप काम कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में डेवलपर मोस्टली इनका कंसर्न होता है, सो दे नीड डिफरेंट टूल्स एंड गूगल ऐप इंजन जो है ये आपको ये डिफरेंट टूल्स जो है वो प्रोवाइड करता है। But also for such tool you need storage, so they have shared hardware, meaning that it's multi-tenancy का approach यहाँ पे भी है। multi-tenancy is something which is very much relevant to the cloud services कि मल्टीपल यूज़र्स हैं वो एक रिसोर्स को जो है वो शेयर करते हैं। तो अगर हम हार्डवेयर की बात करते हैं, सो मल्टी टेनेंसी इज़ देयर, मल्टीपल यूज़र यूज़ देयर हार्डवेयर एट द सेम टाइम।
your Google app engine is actually sort of time shared over multiple different people. You don't get a single CPU to yourself, you don't get a single hard disk to yourself. Rather, it has been shared by multiple users, that is called multi-tenancy. There is a cloud storage which is also shared, and there is object store. इस पे हमने बात की थी फर्स्ट प्रोवाइडर पेज डिटेल्स में हमने देखा था कि स्टोरेज इज़ इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और जिस तरह आपको जो है वो अमेज़ोन जो है नो एसक्यूएल की की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा था, गूगल में भी नो एसक्यूएल का ऑप्शन अवेलेबल है, which is for consistency also and for fast access also and for big data also. So NoSQL भी है। इसके अलावा अगर आप SQL के शौकीन हैं तो MySQL बेस्ड रिलेशनल क्लाउड SQL भी का भी ऑप्शन अवेलेबल है। यानी सिर्फ NoSQL को ये सपोर्ट नहीं करता, SQL बेस्ड डेटाबेसिस को भी ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो एक चीज़ है and that is very much famous, and that is the Hadoop. So it also offer Adobe Hadoop on top of its system. It offer cloud based services that is in the form of publish subscribed. अगर आपने नाम सुना हो publish subscribe based system का, so ये उसका सपोर्ट भी गूगल में अवेलेबल है। और इस पब सब बेस्ड सिस्टम या पब्लिश सब्सक्राइब बेस्ड सिस्टम में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई इवेंट है फॉर एग्जांपल, देन यू हैव टू पब्लिश यूर इवेंट्स टू द गूगल क्लाउड, और अदर पीपल्स जो है दे विल सब्सक्राइब एंड लिसन टू दोज इवेंट्स और आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट. सो वन पार्टी इज़ गोइंग टू publish the event while another party is going to subscribe to the events in order to listen to the events. So publish subscribe based system is also supported in Google. It also provide cloud endpoints which allow you to connect different clouds together. Something related with the connectivity, basically details में हम नहीं जा रहे. It also allow business analytic, and that is very much important in relation with the big data concepts. और जो चीज़ ये provide करती है in order to deal with the business analysis, that is called BAPAAS. PAA is stand for platform as a service, and जो start में BA है इट रिप्रेजेंट बिजनेस एनालिटिक्स, यानी आप बिग डेटा के लिए भी आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस या गूगल की सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं. सो बिजनेस एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इट विल अलाउ यू टू डू थिंग्स लाइक बिग क्वेरी, prediction on big data sets, analysis of big data. So you can see it has a broad range of services. Its emphasis is much more on the platform as a service rather than the infrastructure as a service. And its platformer service isn't just sort of one offering. यानी ये सिर्फ नहीं है कि आपको सिर्फ platform as a service ही provide करता है. It has multiple different pieces because it's it's got Google Gmail is another platform, for example, that it offers. So it's really aiming at the customer, at the end user, you can say that. So what I want to say कि सिर्फ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस नहीं है, इनका फोकस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे है, लेकिन इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ये प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि एप्लीकेशन एज अ सर्विस में अवेलेबल है. सो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनका फोकस नहीं है. सो वी आर गोइंग टू सी ओनली वन ऑफ इट, and that is called the Google Compute Engine. So Google does have infrastructure as a service, as I said, and under that is जो इसका नाम है, that is the Google Compute Engine, and the Google Compute Engine pretty much allows you to do many of the things that the Amazon services do, but they don't have so many ways to monitor and to view the system. Although it provides infrastructure as a service, but is not sophisticated as that much as the Amazon services are, because their focus is on the platform as a service rather than infrastructure as a service. So application services
की अगर हम बात करें तो plenty of them are available. जिस तरह सम कुछ एप्लीकेशंस के जो है वो नाम अभी मैंने काउंट किया आप लोगों के सामने, एंड अदर आर मेंशन्ड ओवर हियर इन द स्लाइड. One of the more impactful services that Google does provide is part of the Google package are the Google Maps. और मैप्स को हम नॉर्मली गूगल मैप्स को हम नॉर्मली यूज़ करते हैं फॉर नेविगेशन पर्पसेस, राइट. लेकिन अभी रियल टाइम में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. जिस तरह मैंने एग्जांपल दी ट्रैफिक की, ओके, तो आप उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं. और इसके अलावा ऑन टॉप ऑफ गूगल मैप्स लोग जो हैं बहुत सारे एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं. डिज़ास्टर मैनेजमेंट की एप्लीकेशन हमने देखी थी इन द लास्ट वीक. There is actually an application which use Google Maps. उसके ऊपर जो है वो एप्लीकेशन बिल्ड की गई है. इसके अलावा गूगल मैप्स को आप यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल डिलीवरी पर्पसेस, फॉर प्रोवाइडिंग लोकेशन बेस्ड सर्विसेज. कहाँ कहाँ पे कौन कौन से गेस्ट स्टेशंस कहाँ कहाँ पे हैं. इसके अलावा इफ़ यू वांट टू सर्च फॉर फूड नियर बाय फूड, सो यू कैन यूज़ गूगल मैप्स फॉर देम. So there is one of the famous application provided by the Google, and that is in the form of the Maps, which was normally used for navigation, but now it has other application areas as well. It also provide a service, and that is related with translation. गूगल ट्रांसलेट का आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, आप लोगों ने यूज़ भी किया होगा कि किसी एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. एंड दे हैव वेरी सोफिस्टिकेटेड मशीन लर्निंग टूल्स अवेलेबल जो कि आपके लिए ट्रांसलेशन करते हैं. ओरल भी हो सकती हैं और रिटन भी हो सकती हैं. ऑल्दो दे स्टिल हैव सम इश्यूज लाइक ग्रामर से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, but still they are doing a very well job in order to translate the text from one language to another language. It also provide you forms filling, फॉर्म्स डेवलपमेंट. अगर आप लोगों ने नाम सुना हो ऑनलाइन सर्वे फॉर्म्स, अगर डेटा कलेक्ट करना है तो लोग उसके लिए आजकल जो है वो गूगल्स की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, फॉर्म डेवलप कर रहे हैं बाय यूजिंग द गूगल प्लेटफॉर्म, एंड देन दे शेयर दोज फॉर्म विद द पार्टिसिपेंट्स इन ऑर्डर टू कलेक्ट देयर इनपुट्स. इसके अलावा विकी साइट्स हैं टू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ कोलेबोरेशन. आपको पता होगा कि विकी साइट्स का रोल क्या है. इट अलाउज यू शॉपिंग, राइट, मार्केटिंग वैल्यूज़, मार्केटिंग व्यूज़ को जो है वो मॉनिटर कर रही है, सो इन ऑर्डर टू डू बेटर एडवर्टीजमेंट एज वेल. एंड इट आल्सो हैज़ अनदर फीचर दैट इज़ कीप के नाम से, which is its way of providing services to the client which want to remember details about the current state of their mobile, like आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है वो याद रखना, and that is the services provided by the Keep. So Google, जिस तरह हमने Amazon के केस में देखा था कि किस तरह हम अकाउंट बना सकते हैं, इसी तरह कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं गूगल ऐप इंजन या गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के, कि किस तरह आप जो है गूगल पे जो है अपने लिए कोई अकाउंट बना सकते हैं या वर्चुअल मशीन जो है वो आप ले सकते हैं गूगल से. So here is a sort of screenshot of the Google. The Google Compute Engine got a nice and a nice looking interface, or you can say the main screen. This is a very competitive market and everybody is currently after trying to get as much as that market as possible. तो उसमें एक कंपोनेंट जो है वो वेब डेवलपमेंट का भी है कि जैसे ही बंदा जो है वो फर्स्ट स्क्रीन पे आए तो उसको जो है वो इस तरह की फीलिंग दी जाए कि उसका इंटरेस्ट जो है वो सर्विसेज लेने में वो बढ़ जाए. So here you see a large a screenshot of a data center having cables. जो मैंने आपको बताया था कि एक जो रेक्स है उसका एक फ्रंट एंड होता है दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और एक उसका जो है वो बैक एंड होता है दैट इज़ वेरी अगली. सो यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ द बैक एंड ऑफ वन ऑफ द डेटा सेंटर ऑफ द गूगल. इसकी पिक्चर जो है वो आपको नज़र आ रही है टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स. सो इसकी डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं कि किस तरह जो है वो गूगल पे आप अकाउंट बना सकते हैं, बट सम ऑफ द स्क्रीनशॉट्स आर हेयर. What we are interested in, we will try to have an account, a student account, a free account
इन द Amazon सर्विसेज AWS, जिसके लिए मैंने अप्लाई की है. आई होप सो कि इन अ कपल ऑफ डेज जो है वो उसका अकाउंट मुझे मिल जाएगा, एंड देन आई विल क्रिएट माई अकाउंट देयर and will share the news with you as well from time to time. So this is basically a description of the screenshots of the Google, and this is a description of their projects in the screen that you are looking at. सिमिलरली जब आप आगे जाते हैं तो वहाँ पे जो आपको चीज़ नज़र आएगी, देयर इज़ अ डैशबोर्ड. जिस तरह अमेज़ोन में आपके पास डैशबोर्ड था, इसी तरह गूगल में भी आपके पास डैशबोर्ड है. एंड देयर इज़ अबाउट द सर्विसेज इन्फॉर्मेशन. और यहाँ पे जो सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं, देयर इज़ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस. तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस से रिलेटेड जितनी सर्विसेज उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी. इसके अलावा चूँकि ये डेवलपमेंट का प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पे इनका फोकस है. सो फ्रॉम हियर यू कैन बिल्ड योर ओन एप्लीकेशन. हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन आप बना सकते हैं. इसके अलावा चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको प्रोवाइड करता है, सो यू कैन एक्चुअली स्टार्ट रनिंग योर वर्चुअल मशीन्स फ्रॉम हियर. यू कैन क्रिएट APIs, you can code different applications and different tools, or you can build your own virtual machines. So that is up to you and on based on your requirement. And this is the next and final screen, and here is a description of the instance that we got from the previous setup. वो इंस्टेंस यहाँ पे शो हो रहा है, आपको कुछ एक्टिविटीज़ भी नज़र आ रही हैं, कितना जो डिस्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, नेटवर्क से रिलेटेड IP एड्रेसेस, जिस तरह अमेज़ोन के केस में हमने देखा था, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी अवेलेबल है. सिक्योरिटी से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ SSH. सो इट वाज अ शॉर्ट इंट्रो टू द गूगल, Amazon and Microsoft cloud services. And this is the end of today's lecture as well. इंशाल्लाह यहाँ तक का जो कोर्स है वो आप लोगों के मिड टर्म के लिए काफ़ी है. वी हैव कवर्ड द 8 weeks of the syllabus well in time, but we still have time, क्योंकि आपका जो मिड टर्म एग्ज़ाम है वो प्लान किया गया है फॉर द मंथ ऑफ जून, यानी मई के एंड तक आप लोगों की क्लासेस जारी रहेंगी. So I will try to make some tutorials or video lectures or to start something practical related with the cloud, related with the big data and so on. So इंशाल्लाह हमारी engagement जो है वो जारी रहेंगी. हमारा जो वेबसाइट, इस कोर्स वेबसाइट के साथ जो रिलेशनशिप है वो जारी रहेगा. आप लोगों को टाइम टू टाइम डिफरेंट टास्क में असाइन करता रहूँगा. वन ऑफ द टास्क इस के हर वीक में आपको 1 या 2 वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको दूंगा, और आप लोगों ने उसका रिस्पांस जो है वो देना होगा. एंड देन वी विल आल्सो ट्राई टू अरेंज अ क्विज, अ मल्टीपल चॉइस टाइप क्विज, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी ऑफ 10 marks, and that is also planned before midterm. So inshallah we will have these activities in the near future. Okay, see you next week. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.